Welcome students in this session of Physics New Era channel. Let us start with a new subtopic in that one that we are going to know about the dimension, which is most important one because it is the soul of this chapter. So let us deal with this dimension. So let us define the dimension first. See the definition. Here it is: the power to which a suitable power to which a fundamental units a symbol of fundamental units are raised to obtain the unit of any physical quantity is known as a dimension of that physical quantity. Once again, suitable power to which the symbol of fundamental units are raised to obtain the unit of any physical quantity is known as a dimension. Let us see the example of that one. Let us start with the dimension. Already we are given the definition regarding this one. This is the dimension. Now related to that one, dimension, we have already seen the definition. Definition, it is over. Now let us explain the concept of dimension. See, once again the statement regarding that one. Here, a suitable power to which fonda or symbol of fundamental units are raised to obtain the unit of any physical quantity is known as dimension. Let us take an example. Here, the volume, always I am going to take the volume as a, we say, L cube, length cube. So this can be represented just like this. Here it is. This is the dimensional formula. But here, the dimension of this one can be represented just like this. This is the dimension of this one is m0 L cube t raised to power 0. Why this 0 power it is taken? That we are going to know in the rules. So then what are the rules? Let us see the rule one by one. Here it is, the volume can be represented by the L cube. Volume can be represented by the L cube, and it is represented just like this. Can we use another symbols also? Yes, several symbols we are going to utilize. But before that one, let us see the rules. How the dimensions of any physical quantity can be obtained. Without that, we cannot go further. So this is the most important one. Rules of writing the dimension. Rules of writing rules of writing the dimension. Rules of writing the dimension. Rules of writing dimension. So let us write that dimension rule. Number 1. Here it is the heading before you. Rules of writing the dimension. Only 6 rules we are going to follow. But these rules, along with the example, I would like to explain. So one by one, the symbol of, we say symbol of units are written in a capital letter, in a square bracket. See symbol. What are the symbols of the units, fundamental unit? Let us consider the mass. Mass M. Mass M. Length L. Mass, length. Then we have the time, can be represented by the capital T. Mass, length, time. Then we have the temperature. Here I am going to write that temperature. Here temperature it is. So temperature it is denoted by the symbol, or can be represented by the symbol K. Then we have the electric current. Electric current can be represented by I. And luminous intensity, can be represented by, here it is, luminous intensity can be represented by, here I am going to write it properly, intensity can be written as C. So how to represent this? As for the first rule it is concerned, the symbol of fundamental units or fundamental quantities, the symbol of fundamental quantities are always
written in capital letter in a square bracket. In a square bracket. These are the symbols. So I am going to write that MLTKIC. Just like that, we are going to write. This is the primary step. We are going to say that. This is the rule of writing the dimension. How we are going to write that? Just like this, MLTKIC. Just like that. M represent the mass, L represent length, T represent time. Here K represent, because it is the unit of that temperature is Kelvin. That's why K. So electric current, it is denoted by the I. Symbolically, we are going to term that I. Luminous intensity, candela. That's why C it is. So these are the symbolic representation in a capital letter in a square bracket. Now the next one, which is most important one, the unit which are absent are written with the power 0. Unit, once again, the unit which are absent are always written with the power 0. Let us see the example. Here I am going to take the example. Here let us consider we have the length, or we are going to measure the area, or we are going to measure anything. Just like the example before you, here it is the volume we are going to take. Already we have taken this volume. Volume is represented by the LQ. So how to represent that? Here it is, the representation before you. Already we have written that one. M0, L0, L raised to power 3 and T raised to power 0. What about the remaining terms? M, which is absent, because in a volume, we know that mass is absent. So M raised to power 0. The units which are absent are written with a power 0. Here, 0, L raised to power 3. So T raised to power 0. What about K? K raised to power 0. I raised to power 0. C raised to power 0 in a square bracket. The unit which are absent are written with the power 0. Just like this. This is the second one which is over. Now the third that we are going to know. See, the unit which are present in the denominator should be taken in a numerator by assigning a negative power. One second. Units which are present in the denominator, by taking it in a numerator by assigning it with a negative power. How? Let us see that. Here, let us consider we have the we say velocity. We know the velocity is equal to displacement upon time. Displacement upon time. Displacement upon time. So can be symbolically can be represented just like this. Here I am going to displace in terms of this MLTKIC. Where it is? Here it is. I am going to represent. Here the displacement is nothing but the length, because the person which is standing here it is the person who walks from this position to this position in a straight line, is nothing but a displacement. So this person reaches here. Okay. So here it is. So this person reaches here. This much is the displacement. This is the displacement. So this displacement in a straight line, we are going to term in terms of its length, because it is a straight line distance. So it is represented by the L, and we know that time it is represented by T. So how to represent this? Here it is, L by T. So I am going to write the unit which is present in the denominator must be taken or may be taken in a numerator by assigning a negative power. Here is the power is 1. Here is the power is 1. So L raised to power 1, and here T raised to power, here it is taken in the numerator by assigning a negative power. This is about the velocity. This is the dimension of the velocity. So always it must be as per the first rule. We are going to write it in a square bracket. So this is your velocity. Hence, this is the dimension of velocity. What about the other term? Can we write that term? We can write, but we must be follow the second rule. The unit which are absent are written with the power 0.
If I want to write the m raised to power 0. Here already L it is exists, so L raised to power 1, T it is exists, L raised to power, if it is present in the denominator, should be taken in numerator by assigning a negative power. Here, while taking this one, I am also going to write this k raised to power 0, I raised to power 0, C raised to power 0 because they are absent. Now the next, that is fourth one. Here the fourth one. Now the dimension of any physical quantity can be obtained using a related equation. Dimension of any physical quantity can be obtained using a related equation. How? Let us see. Here it is the formula before you. Using this basic formula, we can obtain the dimension of any physical quantity. Here we have already obtained the velocity dimension. So let us obtain one example. Let us obtain the momentum. Here the momentum is equal to mass into velocity. Here we are going to take this velocity. Here velocity. Mass into velocity. Here the momentum is before you. Let us represent this momentum as a MOV, full stop, is equal to mass can be represented by the capital M, whereas velocity we have already obtained using the basic this formula, that is displacement upon time. So I am going to write the dimension of that one, L raised to power 1 and T raised to power minus 1. This is the dimension of the momentum. Hence, any dimension of any physical quantity can be obtained using related equation or formula. Several examples we are going to take after taking all the rules. So one by one, these fours before rubbing, I am going to explain that in Hindi. देखिए होता ऐसा है कि डायमेंशन हमको जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी डेफिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट है. सुटेबल पावर टू विच, यानी उसके जो भी पावर जो हम लिखते हैं, पावर बोले तो उसके ऊपर जो भी संख्या रहती है सिर पे, तो उसे हम पावर कहते हैं. जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम को L क्यूब से हम रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा, जैसे कि यहाँ लेंथ का क्यूब. तो हमको जब भी रिप्रेजेंट करना है तो हम डायमेंशनली ऐसा रिप्रेजेंट करेंगे L क्यूब, या फिर उसको सिर्फ ऐसा भी लिख सकेंगे हम L क्यूब. ले लीजिए ये रहा आपका डायमेंशन. जैसे कि हम पावर टू विच द सिंबल ऑफ फंडामेंटल यूनिट. देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, किसका सिंबल हम ले रहे हैं, फंडामेंटल यूनिट का सिंबल ले रहे हैं, और उसको किस में लिख रहे हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहे हैं. वो तो रूल रहा. फिर से देखिए डेफिनेशन. सुटेबल पावर टू विच फंडामेंटल सिंबल ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स आर रेज्ड टू ऑब्टेन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी. जैसे कि इसका यूनिट रहा मीटर क्यूब, तो हमको ये मीटर क्यूब जब भी इसको रिप्रेजेंट करना है तो ये मीटर हम लेंथ के लिए लेते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करते समय ये मिलेगा अपने को. तो इसको रिप्रेजेंट करते समय मीटर के लिए हम रिप्रेजेंटेशन देंगे L, क्योंकि लेंथ मीटर में गिनी जाती है. तो यहाँ मीटर क्यूब है तो यहाँ L क्यूब लिखेंगे, उसका ये डायमेंशन रहेगा. ये डायमेंशन का रिप्रेजेंट है, लेकिन इसका कुछ रूल्स है. तो रूल्स हम इस तरह से लेंगे कि पहले कि जो भी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके जो भी सिंबल्स हैं, जैसे कि मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर के लिए K है, इलेक्ट्रिक करंट के लिए I है, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए C है. तो इसको कभी भी कैपिटल लेटर में हम रिप्रेजेंट करेंगे, और लिखते समय हमेशा उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है. कौन से फंडामेंटल यूनिट से आपको मालूम है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस वगैरह वगैरह. लेकिन हम यहाँ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं लेंगे. यहाँ हम मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी ये लेंगे. इसको सिंबॉलिकली हम कैपिटल लेटर में स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे. ये पहला रूल है. बाद में नंबर 2 रूल, चलो ठीक है, ऐसा कंसिडर करते हैं कि कौन सी क्वांटिटी जब भी रिप्रेजेंट करते हैं तो हर बार सभी क्वांटिटी उसमें होना चाहिए, जरूरी नहीं.
तो उसमें कुछ यूनिट एब्सेंट रहेंगी, जैसे कि वॉल्यूम है, वॉल्यूम को हमने पहले रिप्रेजेंट किया है कि एल क्यूब है जिसका यूनिट मीटर क्यूब है। तो ये वॉल्यूम को जब भी हम रिप्रेजेंट करते हैं एल क्यूब, सर हमको पूरे लिखने हैं तो पूरे लिखने तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। जब भी लिखना है जो भी यूनिट एब्सेंट है, जैसे कि यहाँ इसमें मास नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, यानी जो है फैक्टर्स, टाइम नहीं है, इलेक्ट्रिक करंट नहीं है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी नहीं है, तो हम इसको रेज टू पावर 0 लिखेंगे। यूनिट विच आर एब्सेंट आर रिटन विद पावर 0। जैसे कि यम एब्सेंट है तो इसका पावर हम 0 लिखेंगे, टी एब्सेंट है तो उसका पावर 0 लिखेंगे। जस्ट लाइक दैट वी आर गोइंग टू टेक दैट। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज 3। इसमें तीसरा जो ऑप्शन है वो देखेंगे हम कि ये थर्ड जो है 1 2 और ये 3 ये क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे कि हम इस्तेमाल करेंगे कि थर्ड वाला, द यूनिट विच आर प्रेजेंट हियर, थर्ड वन, द यूनिट विच आर प्रेजेंट इन द डिनोमिनेटर। देखिए इसको हम न्यूमरेटर कहेंगे, न्यूमरेटर एंड इसको हम डिनोमिनेटर कहेंगे। जैसे कि डिनोमिनेटर को हम शिफ्ट करेंगे ऊपर, इसका पावर हम माइनस कर देंगे। हालांकि न्यूमरेटर की भी वैल्यू जब नीचे आएगी तो वो माइनस हो जाएगी, ये तो रूल हमको मालूम है। तो हमने यही एग्जांपल देके कहा है कि जैसे वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसा हम लिखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट यानी लेंथ आ गई, जिसको हमने यहाँ रिप्रेजेंट किया है। एक व्यक्ति यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट लाइन जो भी जाता है तो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हम यल से डिनोट करते हैं, जैसे पावर 1। डिस्प्लेसमेंट प्रेजेंट है तो पावर 1 है, टाइम प्रेजेंट है तो उसका पावर 1 है। अब इसको हम डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर शिफ्ट करेंगे तो इसका पावर माइनस हो जाएगा। देखिए यल रेस टू पावर 1 जैसे कि वैसा। अब टी रेस टू पावर -1 हम शिफ्ट करेंगे ऊपर और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने के बाद इसका डायमेंशन आ गया। चलो हम देखेंगे कि ये फोर्थ वन में इतना सिंपल है ये कि जिस किसी फिजिकल क्वांटिटी का हमको डायमेंशन यानी निकालना है तो उसके लिए उसका रिलेटेड इक्वेशन हमको मालूम होना जरूरी है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है। मोमेंटम जैसा है तो मोमेंटम के लिए हमको मालूम है कि मास इंटू वेलोसिटी, mv बोलेंगे हम, कि उसको मोमेंटम, ये जो मोमेंटम हम लिख रहे हैं तो उसका डायमेंशन लिखते समय मास लिखिए। मास के लिए हमने m रेज टू पावर 1 लिख दिया और वेलोसिटी के लिए हमने ऑलरेडी डायमेंशन निकाल चुके हम, तो हम लिख देंगे। और ये स्क्वायर ब्रैकेट में एज पर द फर्स्ट रूल वी आर गोइंग टू राइट इट इन अ स्क्वायर ब्रैकेट। ये स्क्वायर ब्रैकेट में हमने लिख दिया है। ये रहा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी विच इज ऑब्टेन यूजिंग रिलेटेड इक्वेशन। अब हमको फिफ्थ और सिक्स्थ कंटिन्यू करना है। I will rub this one and I will continue. Very simple concept that fifth we are going to take, that constant in the equation has no dimension. Very simple concept. The constant in the equation, see I am going to write here, the constant in the equation, constant in equation has no dimension. No dimension. Very simple concept it is. See, few of these constant, number of constants are there while we are going to deal with the physics formulae. But few of these constants, just like we say force, which is given by 6 pi eta r into v. Here the formula is new for you, which is totally new for you, but here it is coming. Means here in this one, we can easily understand the constant values which are present in this equation. Which are those? Here it is 6 pi is a constant. 6 pi is a constant that we are going to utilize, and its value is constant, and that's why this constant has a no dimension. But several constants are taken as a constant of proportionality which has a dimension. But such a value which is remain constant, whose value is a remain constant, just like that, these are termed as a constant. This is one of the best example of that constant. That constant in the equation has no dimension. So this equation which is constant value, because we know that pi value is always, we know that it is a 3.142 approximately, and 6, it doesn't change. So 6 into pi, that gives us a constant value. So it has a no dimension. So 6 pi
is don't have any dimension. No dimension. Here it is no dimension, just like this. Now we have the last one. Dimension gives us a nature of the quantity, not the magnitude. The dimension provides or give the information, gives nature of quantity, or which explains the nature of quantity, not the magnitude. What is meant by magnitude? That is important, which is unknown to us. We know that if the mass of the body, it is 6 kilogram. Mass of the body is 6 kilogram. This kilogram indicates the nature of the dimension. We know it has a dimension that is m raised to power 1. But it will never indicate whether it is 6 which is absent, because we know this is we say magnitude. Means this 6 represents magnitude. This one is magnitude. This will decide actually the value of that mass. That is maybe 12 kilogram, maybe 24 kilogram. Means mass indicates. Here mass, in this one, this value indicates the magnitude, whereas this indicates here the nature of the quantity, that it is related to the mass only, because only m it is represented by me, but here 6 kilo it is represented, just like that. 6 meter represent what? Here it is 6 meter. Here I am going to write, and symbolically 6 meter. So how to represent this? This 6 meter, or we are going to say that 6 is the magnitude, meter is the nature of the dimension. What indicate? It indicates L raised to power 1. Just like the same, we have how many? 60 second or 60 second. Just like this, here it is written. This indicates second, means directly it gives us a nature that it is nothing but a time, can be represented just like this, t raised to power 1. Means this 60 is nothing but the magnitude, but this cannot be obtained using dimension. Means it gives us a nature of the quantity, not the magnitude. Just like that. Here it is the last one. हम इसको हिंदी में समझाएंगे. जैसे कि बहुत सारे इक्वेशन आते हैं जिसमें डायमेंशन को किसी जगह पे यानी डायमेंशन लिखा जाता है कांस्टेंट, जो भी कांस्टेंट है इक्वेशन में. कुछ इक्वेशंस को जो भी इक्वेशन में कांस्टेंट आते हैं उसको डायमेंशन होता है. जैसे कि समझो हम ये इक्वेशन लेंगे, f इज इक्वल टू g m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर. ये हमारे दोस्त न्यूटन का फॉर्मूला है, जिसमें इसमें जो भी कांस्टेंट है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, लेकिन इसको डायमेंशन है. स्टिल इट इज अ कांस्टेंट, इसको डायमेंशन है. फिर ये सेंटेंस गलत नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि ये कांस्टेंट इसलिए कहा गया है कि कांस्टेंट की कीमत, जो भी कांस्टेंट है जैसे कि 6 पाई है, जो बदलने वाली नहीं है, तो उसको हम कहेंगे कि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है. अब जैसा हम यहाँ g को शिफ्ट करेंगे तो इसको एक यूनिट भी मिल जाएगा. जैसे यूनिट कैसा है देखिए, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2. इसके लिए डायमेंशन बहुत ही सिंपल है. जैसे कि फोर्स के लिए हम न्यूटन कहेंगे, ये मीटर स्क्वायर डिस्टेंस रहेगा, और ये किलोग्राम में इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि किलोग्राम इंटू किलोग्राम स्क्वायर. अब इसको यूनिट है, मतलब इसको डायमेंशन भी है. ये हमने स्क्वायर ब्रैकेट में एक्सपेक्ट नहीं है, यानी सिर्फ लिखा है. तो g इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये रहा. लेकिन ये कांस्टेंट रहते समय भी कुछ इसका डायमेंशन हम निकाल सकते हैं. लेकिन ऐसे कुछ क्वांटिटीज रहते हैं जैसे कि 6 पाई है, जिसमें ये कांस्टेंट है, इसकी कीमत बदलने वाली नहीं है, तो उसका डायमेंशन होता ही नहीं. जैसे कि यहाँ पाई की कीमत 3.142 है और ये मैग्नीट्यूड दिखाती है,
तो इसको हम कहेंगे कि ये इसको डायमेंशन नहीं है। कांस्टेंट इन द इक्वेशन हैज नो डायमेंशन। और लास्ट, डायमेंशन गिव्स द नेचर ऑफ द क्वांटिटी, जो नेचर बताता है कि कैसा है ये, यानी क्या है, एक्चुअली मास है, लेंथ है, टाइम है, लेकिन ये मैग्नीट्यूड बिल्कुल नहीं बताता है कि कितनी मैग्नीट्यूड है। ये संख्या हम ला नहीं सकते डायमेंशन से। तो ये रहे हमारे डायमेंशन जो हमारे सामने है। ये 6 रूल्स हमको फॉलो करना है डायमेंशन निकालने के लिए। तो इसके बाद हम कुछ और, यानी कुछ क्या बोलेंगे इसको, कॉन्ट्रडिक्शंस, ड्रॉबैक्स, कि जिससे डायमेंशन में भी कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, तो वो कॉन्ट्रडिक्शन ड्रॉबैक्स हम देखेंगे, या फिर कुछ लिमिटेशंस हम देखेंगे, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन।